Hi guys, welcome back to the channel. So last class we have studied about the diagnosis and diagnostic workup and histopathology. Today we'll be starting the treatment of Pemphigus vulgaris and its prognosis. Okay, let's start. Treatment. Oral only Pemphigus vulgaris responds well to systemic corticosteroid regimen, and in some cases it responds incompletely to prednisone, that is a corticosteroid, and require the addition of either rituximab 600 to 900 mg or cyclophosphamide 50 to 100 mg twice daily, or azathioprine 50 to 100 mg. Cases that remain refractory to this regimen, methotrexate 25 mg per week substituted for azathioprine or rituximab, and plasmapheresis may be used, okay, as method for reducing the corticosteroid doses. So these are the drugs when सिर्फ corticosteroid systemic therapy काम नहीं करता तो will add all these drugs. In resistant or progressive cases, or in cases in which the effect of long-term corticosteroids accumulate, rituximab combined with intravenous gamma globulin (IVG) or mycophenolic acid may be required. या तो रेजिस्टेंट केसेस हो गया या फिर ऐसा जहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक्यूमुलेटेड हो गया, देन वी विल गो फॉर गामा ग्लोब्यूलिन, इंट्रावीनस गामा ग्लोब्यूलिन. Patient will present with a recent history of decreased oral intake and frequently secondary infection. It is often necessary first to provide hydration with intravenous fluid and to begin antibiotic therapy and pain control measures. So patient आएंगे, बोलेंगे कि उनका जो ओरल इंटेक हो गया है वो कम हो गया है, तो हमको सबसे पहले इंट्रावीनस फ्लूइड देना है हाइड्रेशन के लिए, और तुरंत ही एंटीबायोटिक थेरेपी और पेन कंट्रोल मेजर्स स्टार्ट कर देना है. ओके, नाउ कमिंग टू द प्रोग्नोसिस, दैट वाज अबाउट ट्रीटमेंट में तीन चार ही चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड रेजिमेन ओरल ओनली पेम्फिगस पे काम करते हैं. अच्छा, जिस केस में काम नहीं करता उसमें हम लोग 2-3 ड्रग ऐड करते हैं, और अगर रेजिस्टेंट हो गया तो विल ऐड गामा ग्लोब्यूल. ओके, नाउ कमिंग टू प्रोग्नोसिस. Untreated skin Pemphigus vulgaris is usually fatal in 2 to 5 years. Treatment of cutaneous pemphigus result in a residual 10 to 15% mortality rate at 15 years because of complication of long-term prednisone therapy and other immunosuppressive drug. क्योंकि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी होता है उनका वो इम्यून सप्रेसिव भी होते हैं और उनकी और भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो 10 to 15% मोर्टेलिटी रेट हो जाता है एट 15 ईयर्स. और जो स्किन भी इंक्लूड करते हैं ओरल के साथ उनका मोस्टली दे आर फेटल. ओके, तो 2 to 5 ईयर्स तक फेटल. नाउ the most common cause of death is Staphylococcus aureus septicemia. तो सबसे important cause या common cause क्या होता है डेथ का? Septicemia, which is often difficult to detect because of the immune suppression caused by concomitant corticosteroid therapy. ऑब्वियसली ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेस्ड है क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी चल रहा है, तो सेप्टिसीमिया डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. Now, the oral only Pemphigus vulgaris is more responsive to the therapy, that is corticosteroid therapy, and it is usually not fatal like skin one. It has much better response to prednisolone therapy initially and has a much higher remission rate in patient either on maintenance therapy or in a drug-free state.
It also has a reduced mortality rate due to more complete response to corticosteroid therapy and hence fewer complications. In general, जो oral only pemphigus होता है उनका prognosis अच्छा होता है और जो skin involve होता है उनका prognosis उनका इतना अच्छा नहीं होता. That's all about pemphigus vulgaris. Next class will be starting the new topic. Till then, like, share, subscribe and comment. Bye.